विषय आम जानी सहित आम देखी कमांड लाइन आर्गुमेंट कौन और कमांड लाइन आर्गुमेंट केमती यूज कर तो बेसिकली आम जानले कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कौन और केमती यूज करबा तो तुमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करिवार अछि तमरो रिक्वायरमेंट कौन राइट तो सही रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुमको पोजिशनल पैरामीटर तमे यूज करिवो राइट तो आई होप कि एवरीवन वुड हैव डन प्रैक्टिस लाइक जहां भी हमें गतकाली पढ़ी राइट तो सब प्रैक्टिस करिथियो तो प्रैक्टिस कला बेले तो माइंड रे किछि ना किछि आस्तियो राइट व्हाई शुड आई यूज दिस कमांड लाइन आर्गुमेंट को केस रे हम दरकार पड़ी राइट तो मैं जंती गोटे एग्जांपल नै कि देखिले गोटे जस्ट सिंपल कोन गोटे एडिशन करिथिले राइट सिंपल एडिशन जोतरी कि हमें दुईटा आर्गुमेंट पास करथिले और तार सम कैलकुलेट करिकरी हमें शो करथिले राइट तो सेही टाइप रो हमें चाइले भी गोटे कैलकुलेटर बनै पारी राइट कैलकुलेटर विषय दुईटा केवल जंती कैलकुलेटर हमें दुईटा डिजिट दोचे तार ऑपरेशंस कौन बा एडिशन करूचे कि सब्सट्रैक्शन करूचे कि मल्टीप्लिकेशन करूचे तापर ता रिजल्ट आसुची एग्जैक्टली तमे सेमती आर्गुमेंट पास करि परियो बट ता पय हमको किसी कंडीशंस केसेस आ विशेष पढ़िबा पड़िबो तो से पर्टिकुलर प्रैक्टिस करबा पूर्व हमको आगे सब देखिबा पड़िबो तो मे बी नेक्स्ट क्लासेस रे हमें कंडीशंस ऊपर पढ़िबा तापरे ई प्रोग्राम सब सेल प्रोग्राम छोट छोट सेल प्रोग्राम करिबा ओके तो आज क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा रीडायरेक्शन ऊपर व्हाट इज रीडायरेक्शंस एटा भी बहुत दरकार बहुत इंपोर्टेंट जेमति कि स्पेशल वेरिएबल बहुत इंपोर्टेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट बहुत इंपोर्टेंट सेल स्क्रिप्टिंग रे सेमति रीडायरेक्शंस आल्सो इज वेरी इंपोर्टेंट okay so what we have to do first let's understand what is redirection तापर हमें कुछ स्मॉल प्रोग्राम करिबा रिडायरेक्शन ऊपर तापर हमें मूव करिबा अलगा टॉपिक्स पढिबा राइट सो व्हाट इज रिडायरेक्शन तो रिडायरेक्शन जो नाट जो वर्ड ताइसरा में कोन माने कोनसी गुटे आउटपुट को बा कोनसी गुटे रिजल्ट को हमें रिडायरेक्ट करी गोटे रिजल्ट को आउटपुट को हमें रिडायरेक्ट करिबा सो जो रिडायरेक्शन करा होची इनपुट आउटपुट को राइट तो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स द्वारा इनपुट आउटपुट रे हमें कोन करछ ना बास सेल रो 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स अछि इनपुट आउटपुट रे गोटेला स्टैंडर्ड इनपुट गोटे कमांड को हमें गोटे इनपुट दवा राइट तो स्टैंडर्ड इनपुट बाय stdin राइट stdin द स्टैंडर्ड sdin stream is numbered as stdin जोटा कि हम 0 रे स्टार्ट होछि जब हम 0 यूज करिब then the standard input will be treated as standard input so the bar cell takes input from the standard in by default keyboard is used as input तामे जते बळे किछि गोटे प्रोग्राम लिखुचे एग्जीक्यूट करूचे राइट तो बाय डिफॉल्ट हमें कौन इनपुट यूज करते हमें कीबोर्ड रे किछि डाटा एंट्री करूचे इनपुट दउचे राइट बाय डिफॉल्ट कोन आसीबो हमर कीबोर्ड जोटा कि हमें किछि इनपुट दउचे राइट तार वैल्यू है 0 सेमति हमर स्टैंडर्ड आउटपुट रहउची स्टैंडर्ड आउटपुट रो वैल्यू है स्टैंडर्ड आउट std आउट तार वैल्यू है 1 द नंबर द स्ट्रीम नंबर स्टैंडर्ड इन रो स्ट्रीम नंबर है 0 स्टैंडर्ड आउट रो स्ट्रीम 1 और स्टैंडर्ड एरर 2 ओके तो माने जेतबे हम गोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करियो राइट whenever we execute a program either it will success or fail right fail means it will throw error if success it will give some output right standard output so that output we can redirect to a file the success output we can redirect to a file okay so we'll see how we can redirect this file there are different stream we'll use like which stream I'll show you our upcoming slides okay सेमती जेमती स्टैंडर्ड एरर भी जदी कोनसी एग्जीक्यूट जदी सक्सेस हैला राइट सक्सेस हैला एटा कोन आसीबो 1 सक्सेस कोड स्टैंडर्ड आउटपुट हमरा आसीबो std आउट जदी एरर थ्रो कला राइट स्टैंडर्ड एरर तर
एरर आसला जदि किछि फेल्युअर हैला तो आर कोड हैला 2 स्टैंडर्ड एरर कोड हैला 2 ठीक standard error is numbered as 2 the bar cell sends error message to standard error message goes to display so it will just display whatever the error तो आमे कोन करबे ना जे कोन सी प्रोग्राम में लास्ट क्लास रे आमे गोटे स्मॉल सेल स्क्रिप्ट यूज करथिले आमे देखिथिले भी किछि एरर भी आसुतला से एरर कोन होतला हमर टर्मिनल ने डिस्प्ले होतला जहाँ भी आउटपुट आसुतला टर्मिनल डिस्प्ले होतला जहाँ भी एरर आसुतला टर्मिनल ने डिस्प्ले होतला तो से सब दिन को आमे कोन करबा जदी चाहबा ताको रीडायरेक्ट करबा पई चाहबा रीडायरेक्ट करबा पई देन वी कैन रीडायरेक्ट यूजिंग दिस स्टैंडर्ड आउट एंड स्टैंडर्ड जस्ट अ सेकंड गाइस so we can redirect these things okay now let's see how we'll do these redirections and what are the syntax we have to use so redirection into a file जोटा कि बर्तमान बताउथली जहां भी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करछे बा कमांड एग्जीक्यूट करछे तो हमें तले गोटे कमांड एग्जीक्यूट करिवा सो व्हाट विल हैपन it will give some output right मैं गोटे कमांड एग्जीक्यूट करले तार आउटपुट शो करिवो से हम डिस्प्ले करिवो तो सेटा को हमें चाहिए रीडायरेक्ट कर दा गोटे फाइल को how will do that so redirections हमरो यूज होची how will do that either by overwriting or by appending so हमें यदि सिंगल ब्रैकेट बा डबल ब्रैकेट यूज करिवा सिंगल ब्रैकेट डबल ब्रैकेट तो सिंगल ब्रैकेट कोन पई यूज होची सिंगल ब्रैकेट is used to overwrite single bracket is used to overwrite and double bracket be used to append it will not overwrite okay first let's understand जहां भी स्टैंडर्ड आउटपुट को तो हमें जदी गोटे ग्रेटर देन सिंबल दबा ताला स्टैंडर्ड आउटपुट को हमें रीडायरेक्ट करूचे गोटे फाइल को सपोज मु file.txt को रीडायरेक्ट करली so what it says it overrides जदी गोटे मु सिंगल ग्रेटर देन सिंबल दोउची तो सिंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन सिंबल दोउची देन कोन होबो ना जहां भी आउटपुट आसीबो that will get override to the file.txt suppose file.txt रे ऑलरेडी किछि फाइल अछि ऑलरेडी किछि डेटा अछि तो से डेटा हमें जदी गोटे ब्रैकेट दबा ग्रेटर देन सिंबल कोन होबो जहां भी आउटपुट आसीबो सेटा सब ओवरराइट हे जिवो पुराना जहां सब डेटा थियो ताको डिलीट करके द नुवा डेटा सब एंट्री हे जिवो सिमिलरली स्टैंडर्ड इनपुट हमें किछि इनपुट जदी दबाउ चाहू छे धर गोटे कमांड एग्जीक्यूट करछे बा गोटे फाइल ओपन कैट यूज करके कैट फाइल नेम यूज करके हम जदी किछि इनपुट दबा देन दैट इनपुट आल्सो विल गेट ओवरराइट टू दिस फाइल it will get override to this file so input asla it also will get so input पाए हमें less than symbol single less than symbols बा single bracket less than symbol दा यूज करबा तो किछि एरर आसिला जदी किछि गोटे कमांड हमें यूज करूचे गोटे प्रोग्राम सेल स्क्रिप्टिंग हमें यूज करूचे सेल स्क्रिप्टिंग किछि एरर थ्रो कला and we want this error to be redirected to a file तो बेसिकली कोन होछि ना देखिथिबो हमें फाइंड कमांड जेतबे एग्जांपल देइथिले फाइंड कमांड गोटे पर्टिकुलर फाइल जेतबे हमें सर्च करूथिले माने थिबर तेतबे फाइल सर्च करूथिले कोन होतला ना सी किछि एरर थ्रो करथला आउट तार किछि आउटपुट सक्सेस रिजल्ट भी देखौतला आउटपुट विथ एरर डिटेल्स राइट एरर स्टैंडर्ड आउटपुट बोथ वर शोइंग सो व्हाट वी डिड दैट टाइम हमें कोन करथले जेतबे हमें फाइल सर्च करथले बहुत सारा एरर देखौतला राइट सो एरर को हमें कोन करथले ना माने थिबर टू कोड देकरी रीडायरेक्ट करथले कोडी की dev/null माने पडुची तो dev null टाइम रे कोन हला जोटा की गोटे ब्लैक होल बा गोटे स्पेस इनफाइनाइट स्पेस वेयर सबु जाक error all the errors will go and placed over here and will never get it back it will not display to the
terminal, everything will be passed to this dev null. It will never say saved anywhere. Everything will go away, right? तो टू ढाला कौन हम एरर कोड केवल एरर को जो एरर मेसेज आसला ताकू ही सो माने पास कर दोतला बाकी सब स्टैंडर्ड आउटपुट डिस्प्ले करतला ठीक सेटा हमर कोन एरर कोड तो तापे हमें टू ग्रेटर देन सिंबल यूज करियो केवल एरर को पास करियो तो एक केस रे कोन होची आमे जे टू ग्रेटर देन सिंबल यूज करछे जहा भी फाइल एठी दोउछे एठी मु डेव नल देले जेतु मते एरर किछि दरकार नै तो एठी सब जहा भी एरर लॉग्स आसीबो सब पळेबो राइट इट विल गो टू ब्लैक होल बा इनफाइनाइट स्पेस को पळेबो जोटी कि हमें वी कैन नॉट गेट इट बैक बट समटाइम्स कोन होची ना हमारा जो भी एप्लीकेशंस हमें यूज करूछे राइट ऑटोमेशंस करूछे ता पई कोन जो भी एप्लीकेशन लॉग्स को कोन हबन हमें गोटे जगह स्टोर करी रखिबा हमें चाहबा एरर को हमें आइडेंटिफाई करबा बट ट्रबल शूट टाइम रे किछि इश्यूज आसला से इश्यू ट्रबल शूट करिया पई हमके एरर लॉग्स दरकार तो हमें कोन करबा से एरर को गोटे फाइल कर दवा कोन एरर डॉट लॉग त माने कोन होबा सब जगह एरर डॉट लॉग रो गोटे फाइल जो गोटे पाथ दे दवा से पाथ रे कोन होबा सब एरर हमर स्टोर हे कि रहइबो सिंपल राइट बट एक केस रे कोन होबा ना इट विल ओवरराइट माने हमें प्रीवियस जहां भी एरर थियो किछि पाइबानी नुवा एरर सब बेले जहां भी होतो इट दैट इज नॉट गुड राइट ओवरराइट इज नॉट गुड सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू ओवरराइट एंड व्हेन टू अपेंड व्हेन टू ओवरराइट एंड व्हेन टू अपेंड सो अपेंड केस रे कोन होची हमें डबल ग्रेटर देन सिंबल दवा सेम थिंग एटी हम सिंगल ग्रेटर देन सिंबल दोतले सिंगल ब्रैकेट एटी डबल ब्रैकेट दबा डबल ग्रेटर देन सिंबल जोथरे की जो भी फाइल हमें पास देबा स्टैंडर्ड आउटपुट जो फाइल दबा फाइल नाटा file.txt सपोज एटी कोन होबा ना फाइल सब सपोज एटी दुईटा लाइन अछि इथरे जदि हमें आउ गोटे दुईटा त लाइन पास हो सेटी कोन अपेंड हे जिवो त तळ तळ से फाइल रे सब अपेंड हे कि न सिमिलरली एटी स्टैंडर्ड इनपुट अछि हमें लेस देन सिंबल दो जदिटा स्टैंडर्ड इनपुट अपेंड होबो आउ जदि एरर लॉग को किछि अपेंड करिया पई चाहू छे देन यू कैन यूज टू ग्रेटर देन सिंबल दिस विल append the errors right append the standard error std error right it will append the standard simple बुझि पाला let's do तापर ऑपरेटर अछि ऑपरेटर पढिबा आगु लेट्स डू द एग्जांपल्स जोडे भी हमें पढिले वर्तमान तार गोटे छोटो एग्जांपल हमें करबा राइट लेट्स ओपन द लिनक्स टर्मिनल okay fine so आज आ गोटे फाइल सेल स्क्रिप्ट क्रिएट करबा क्विकली मु जाउची क्रिएट कर देबी vi redirect demo .sh ओके हम किछि पछानु डायरेक्टली देखबा स्टार्ट कर दोची आई होप एवरीवन नोज व्हाट आई एम राइटिंग राइट किछि डाउट नै जदि डाउट अछि मते पछारी पारो देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू सो बिन बास लिखि देली देन मु कोन करछि गोटे सिंपल गोटे फाइल किछि गोटे डाटा लिखुछि गोटे सिंपल एको hello shell script hello shell script okay and today's time the time now is the time now the date okay the date the time actually time देखुछि the time now is तो मते एठी कोन डेट कमांड यूज करिया पड़ियो डेट तो डेट कमांड यूज करिया गेले मते कोन बैककोट भीतर देखिया पड़े जेतु मैं एको कमांड भीतर लिखु छी एटा राइट हैव टू यूज बैककोट हियर बैककोट भीतर मते यूज करिया अछि डेट कमांड डेट सो डेट कमांड यूज करिया पे यूज करिया प्लस sorry percentile d sorry not percentile d
So we have to use plus percentile hour, right? Hour time, where time kete achi dekhibi, percentile m per minute, percentile s for second. So it hala kon deli separated type ro colon dei deli जोटा कि hours specify करिवो तापरे हमरो minute specify करिवो तो ई सब जाक हम कोन कली इति टोटल एग्जैक्टली सब जाक हमर ला कोन डेट कमांड पार्ट ऑफ डेट कमांड राइट तो ई डेट कमांड को मु बैक कोड भीतर रली ता माने कोन एटा एग्जीक्यूट करिवो राइट लेट्स चेक इट कली नाउ I created a simple shell script, so I have to now give the executable permissions, right? So I'll give quickly chmod, okay, 7, suppose 44. Let us. So can anybody tell what does this mean 744? This is octal mode. I changed the permissions. I want someone from you tell me what the permissions should the 744 will have. So user have got, read, write, and execution permission, and then group has got only write permission and sorry, read permission. Then others got the read permission. Okay, perfect. So here, what will happen? The user will get read, write, executable. Other group will get only read. Others also will get only read. Okay. Now, if I just check it, see, 30 column, read, write, read. Perfect. Now I got the executable permissions. Let me execute it. Let's execute it. Done. So what happened here? It gave me, okay. It's my bad. Like I used different options here. It should be capital H, not small h. Okay, capital H, hour, minute, let's say second. Okay, let's save it. Now let's execute again. So what happened? Hour, 14 hours, 55 minutes, 08 seconds. Now mu jodi kahi second सब बड़े change हो, अबे 15 second ही गला, right? Second हो जी. तो मु चाहूँ ची जहाँ भी सब output generate करूँ ची, I want to redirect to a file. So what I have to do? I have to give greater than symbol, and move suppose likely app log or script log dot txt বা script.log লিখি দଉଛି script.log simple কিছু ଗୋଟେ লিখিଦେଲି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ script.log ତ এই କେସ ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି what we are doing here, we are just redirecting the output here, output of this script to this file. So ଯଦି ଆମେ redirection କରୁଛେ, what will happen in shell script in Linux? First it will check for the existence of the file. If the file is there, then the output whatever will generate will get overwrite the content, whatever the content or data inside the script. It will overwrite everything. If the file is not there, what will happen? It will create a new file. तो मैं execute करूनी वर्तमान एबे just control C मारी के पळे आसली मदी ls-lt मारुचिटी त हमर कोन script.log किछि फाइल अछि कि किछि नाही, राइट? मु भी टच भी करूनी, फाइल भी क्रिएट करूनी, तो मु सिंपली कोन कहूची सेम कमांड को रीड स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूची, रीडायरेक्ट करची script.log को रीडायरेक्ट करची script.log. तो एठी कोन करबा से गोटे script.log रो फाइल क्रिएट कर दो और आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दो script.log, right? Let's see. एठी हमर कोन हला किछि डिस्प्ले कलानी काहे कि ना जहां भी आउटपुट असला हमें ताकू स्टैंडर्ड आउट स्ट्रीम यूज करके स्ट्रीम रे सेंड कर देले script.log. फाइन. तो एबे जदी हमें देखिबा script.log फाइल ता देखो क्रिएट हो जाई script.log आउ जहां भी आउटपुट एठी डिस्प्ले करतला सेम आउटपुट वी कैन फाइंड इट ओवर हियर.
देखो hello subscript, the time now is 13 seconds, आम seconds को नहीं चलबा, but same command जदि मु आउ थरे execute करबी से कौन करबा ना कंप्लीट डाटा जहां भी थिबो ताको रीड ओवरराइट कर दो। देखो ओवरराइट हे गला, एबे नुवा डाटा आसी गला 51 तक ओवरराइट कर दो। बट द सेम थिंग इफ आई यूज double greater than, what will happen? It will simply append it, right? Double greater than symbol will append it. So ये जो जहां भी हमें पढुछे ना सब जगह तुमको मन रखिबा पड़िबो, प्रैक्टिस करिया पड़िबो। जब जदी प्रैक्टिस न करिवो डेफिनेटली सेल स्क्रिप्टिंग कला बेलू तुमको टिके डिफिकल्टीज आसीबो, जेतु तुम भूली जाइथिबो, राइट? तो सब बेले प्रैक्टिस करो, तुम इजीली जो भी प्रोग्राम करियो ने लॉजिक आइडियाज असला में तुम इमीडिएटली से कांसेप्ट तुमरो मन पड़ी जिवो। ओके परफेक्ट। सो लेट्स सी द फाइल नाउ। फाइल देखिबा एबे देखो एटी कोन हला अपेंड हे गला 51 लास्ट थिला 13 58 13 म आउट एग्जीक्यूट करबी। जेते तो मैं एग्जीक्यूट करबी विथ अपेंड से कौन हम ना सब टाइम अपेंड ही चलती। देखो तीन टा अपेंड, राइट? एटी में जदी आउतरे कौन करबी केवल ग्रेटर देन सिंबल सिंगल मारिबे। एबे कौन कर पुनी फाइल चेक करे ओवरराइट करे, राइट? जहां भी डेटा थिला, जहां भी कंटेंट थिला, राइट? डेटा थिला सब जगह ओवरराइट हेगिरी नुवा डेटा। बी केयरफुल whenever you are using redirection, right? जदि सिंगल यूज करूथबो जो फाइल भी थियो सब ओवरराइट हे जिवो, तो तमरो पुराना लॉग किछि भी थिबो ना सब ओवरराइट हे जिवो। इट्स वेरी 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 केयरफुली यू हैव टू राइट ऑल these things. एरर साइड हम सब किछि प्रैक्टिस करबा। एरर साइड व्हाट हैपेंड, ओके? सो एरर लॉग को हमें चेक करबा। वर्तमान में कोन करछि सेही redirect.demo sh रे किछि गोटे कोन करछि, जस्ट वन सेकंड गाइस। फाइन, तो वर्तमान कोन करछि लेट्स यूज द एरर। मु गोटे किछि भी एरर तादर ऐड कर दोछि, राइट? तो गोटे किछि भी कमांड दे दोछि जो कमांड की एग्जिस्ट नाही, राइट? जेमति कि सपोज pwd1 मार दे, pwd1 कमांड ही नाही किछि, राइट? डन wd1। तो मु इटा स्केल जतले एग्जीक्यूट करबी कोन हो मते एरर शो कला, राइट? कमांड नॉट फाउंड, आउटपुट कला कमांड नॉट फाउंड, राइट? बट मु कोन करछि ना सेम थिंग को रिडायरेक्ट करूछि। रिडायरेक्ट कले कोन होला जानि छ? लेट्स सी द फाइल्स। नी कोन होला पुराना जहां थिला नुवा वर्तमान आडेला कोन होला केवल स्टैंडर्ड आउटपुट टा बाय डिफॉल्ट कोन होछ ना स्टैंडर्ड आउटपुट ही स्टोर हैला, बट स्टैंडर्ड एरर किछि स्टोर होनी। ये जो एरर टा शो कला ए एरर किछि प्रिंट हैला, राइट? जदि मु चाहू छी खाली एरर को प्रिंट करबा पई देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज टू। एबे मतलब टू प्रिंट कली एठी कोन देखेला आउटपुट प्रिंट करतला, एठी खाली एरर को रिडायरेक्ट करदला लॉग फाइल पे, राइट? लेट्स सी, देखो एरर टा को रिडायरेक्ट करदला फाइल पे। बुझी पारलो कंप्लीटली, राइट? इट रिडायरेक्ट्स द एरर्स टू स्ट्रीम जो हमें नंबर यूज करछे रिडायरेक्ट। तो एठी कोन हला केवल एरर पास कला। आ जदि मु दे किछि टू न दोछि एरर कोड न दोछि देन कोन होछि ना केवल स्टैंडर्ड आउटपुट को रिडायरेक्ट करूछि, एरर को डिस्प्ले कर दोछि स्क्रीन रे। तो मु चाहूछि बोथ standard output as well as standard error needs to be redirects। तो तापे हमें कौन करिबा यूज करिबा सेम थिंग विल यूज, बट एठी हमें यूज कर दबा %1 2 आउ 1 1 हला हमर कोन स्टैंडर्ड आउटपुट, ओके? 2 हला कोन स्टैंडर्ड आउटपुट, दीटा कोन होबा हमर
डिस्प्ले हो कोटी की लॉग बट मुझे जब चेक करी तो डिस्प्ले करदेला ये किसी रिडायरेक्ट हेलानी राइट तो मुझे कौन करी how we have to use this one this is not the right way to use it so what you have to do we can use same command रहबो to ampersand 1 first हमें redirect करिबा last को हमें तब to error code with ampersand 1 see now what happened what we did first redirection symbol हमें दे देल तापरे हमें कौन redirect करिया हम लास्ट को स्पेसिफाई कर देले कौन करे error with output code तो हमें जब ये देखिए लॉग टा देखो both output आउ error code both output आउ error code मैं पाई तो खाली सिंगल एरर जदि हमें यूज करूचे सिंगल एरर स्टैंडर्ड एरर को हमें सेव करया पे चाहूचे देन व्हाट वी कैन डू वी कैन यूज टू सिंबल तो एठी कोन होची ना ये सब एरर को हमें जते थर एग्जीक्यूट करे ओवरराइट करियो बट हमें जदि अपेंड करया को चाहूचे देन व्हाट वी कैन डू वी कैन यूज अपेंड सिंबल राइट अपेंड कल नेक्स्ट अपेंड आ विच अपेंड करया अछि देन तबे जदि चेक करिवे script dot log see सब जगह अपेंडेज राइट तो इसको फाइल्स हमें हमें एटी कोन सिंपल script dot log दे देले माने जो करंट जो डायरेक्टरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होची सही डायरेक्टरी ए लॉग फाइल क्रिएट ए स्टोर होची तो तमे चाहबो जे कोनसी जगह भी तमे क्रिएट करया पे चाहूछ सपोज मु चाहूची /emp भितरे ए फाइल तक /emp तमाने tmp डायरेक्टरी जो अछि टेम्परेरी डायरेक्टरी ता भीतर मते रखा अछि एग्जीक्यूट कले तो मुझे देबे cd tmp को जीबे सी script.log तो मैं जोटी चाहिए सही जगह क्रिएट कर पाए तो रीडायरेक्शन विषय जानी पाइलो कंप्लीटली केमती रीडायरेक्शन होची राइट सेमती तमे स्टैंडर्ड आउटपुट भी तमे यूज कर परिबो स्टैंडर्ड आउटपुट सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट जेंती कोन वर्तमान देखो मु कोन करछि ना cat फाइल जो यूज कराई छी cat तबे कोन फाइल में cat हम नॉर्मली कोन यूज करे डिस्प्ले करे पे ई जो cat फाइल रे मु चाहूची गोटे किछि इनपुट दवा पई हेलो likely hello linux okay hello linux एठी कोन कली रीडायरेक्ट खाली हमें करिचे बट स्टैंडर्ड इनपुट देइचे कोडी के cat कमांड को स्क्रिप्ट फाइल को इनपुट द पे hello linux मते एंटर मारली कोन हला so this is cat script.log no such file oh sorry cat